मुझे याद है मैं एक आश्रम में जहाँ जाती थी, वहाँ पर जो भोजन बनाती थी और जो आश्रम, जिनका आश्रम था, उन गुरु की वो माता जी थी। तो उन्होंने एक्चुअली अपने घर को ही आश्रम में बदल दिया, क्योंकि एक ही उनका पुत्र था और वो साधु हो गया। तो अब वो क्या करेंगे? तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने सोचा कि अब घर नहीं, ये आश्रम है। तो उन्होंने लीगली उसको आश्रम में कन्वर्ट कर, पर रहे तो उसी में रहे थे। तो वो भोजन पकाती थी, बहुत प्यारी महिला, बहुत सुंदर महिला। हम तो बच्चे थे, उनको देखते थे एकदम, she would always be very immaculately dressed. She wore white clothes, but her dupatta would have a nice lace. Her shirts would be very nicely stitched. Always clean, beautiful lady to look at. And I still remember she had a huge cupboard which had half was the glass and the half was the wood. So you can see the way she had kept her clothing. So nicely stacked, what you see in a showroom. Very beautifully stacked. Everything is so organized. And when she would open, I remember I would be just awestruck to see what a beautiful cupboard. And then I would remember my own, or very bad one. And here this lady has such an organized and beautiful, everything is nice and organized. And if she has some colored clothes, then matching everything will go with that. And then she died. Obviously, everybody is going to die one day. So she had some complications, medical, and she died. And her dead body was brought back from the hospital and was kept in the lower floor. And her room and her cupboards were at the second floor. And I went up to get something, and there I saw these ladies, 3 sisters, standing in front of the cupboard, and they were fighting who will take what. And their elder sister's dead body is right there in the ground floor, and these 3 women were fighting who will take what stuff. And they were just pulling up, and pulling up so badly, they had crumpled up whole cupboard, and they are just pulling the stuff. And here goes, in moments, the cupboard was all empty. And I felt so bad, because when she was alive, she wouldn't allow anybody to touch her clothes. Very hard-working lady, very organized person. And here her dead body is not even cremated, and her stuff is being stolen by her own sisters. And my mind asked the question, what is the use? What is the use? Because here downstairs, I was seeing her dead body. I was 15 at that time. I am seeing that dead body, and this would be a 3rd dead body which I saw in my early life. And I was kind of focused, and I was kind of meditating on that dead body. And here she was bathed, and then she was wrapped up in that white shroud. And her lifeless, limpy body's head is moving from left to right. And then one by one they removed the gold rings, and they removed her earrings, and she was wearing a diamond pin, and that was removed, and her watch is removed. Every ornament is removed, and here her body is just wrapped up in a plain white raw shroud. And then she was tied up on that wooden plank, which will be lifted by 4 people, and then they'll walk all the way to the cremation ground. What's the use? Because she was a mother of our teacher, so we had rose petals in our hand, and we were all on the rooftop. When her body was being taken in the lane, we were all showering petals on her body. What a scene it was.
But I couldn't forget the fightings of those three sisters, the loot of her clothes and her ornaments. And that is the story of actually every human being. We all are protective of our stuff. We all try to be organized. We all try to keep good stuff exclusively for us, without knowing that here the thread of your breath is broken and your stuff will be gone. It's just simply gone. चीजें बड़ी कीमती हैं, अभी आपको ऐसा महसूस होता होगा, पर क्या सच में कीमती हैं? साथ न चाले बिन भजन, बिखया सगली छार. Nothing will go with you other than your spiritual practice, and rest all is a garbage, a useless stuff, says Guru's word. Nothing goes with you. Now, I am not saying that things don't have a utility. Yes, when we are alive, things have utility. But still, their utility is very limited. क्या चीज़ है जिसको हमें कमाना चाहिए, जो चीज़ मेरे काम आए जिंदा रहते भी, और जो चीज़ काम आएगी मेरे मरने पर भी, और वो है आपकी साधना. आपके बैंक में कितना रुपया है, आप कहीं हिसाब किताब, बैंक की पासबुक, कुछ न कुछ पेपर रखते हो. आजकल डिजिटल हो गया है, तो ईमेल में आ जाता है कि आपके इतने एसेट्स हैं, आपके इतने शेयर्स हैं, आपका इतना फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपका इतना प्रॉपर्टी है, यू नो दैट म्यूचुअल फंड है, तो कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ इक्विटी है. यू हैव लिस्ट ऑफ ऑल द स्टफ व्हाट यू हैव अर्न्ड मनी वाइज, आई एम सेइंग. But my question is, do you have a piece of paper which tells you what you have gained spiritually? What have you really earned spiritually? What is your asset spiritually? आपने धर्म की क्या कमाई की है, क्या उसका भी कोई हिसाब है तुम्हारे पास? आपकी ध्यान में कोई अच्छी अनुभूति हुई थी या नहीं? आपका मन एकाग्र और शांत हुआ था या नहीं? आपका मन बंधनों से आजाद हुआ या नहीं? आपका मन मोह से छूटा या नहीं? क्या इसका हिसाब किसी कागज, किसी ईमेल कहीं पर है? चूंकि किया कुछ नहीं है, इसलिए है कुछ नहीं. जो यहां मिलता है हमको, वो सब यहीं रहता है. परिवार दूर की बात है, घर दूर की बात है, रुपया पैसा दूर की बात है. ये जो तुम्हारा शरीर है, ये भी तुमसे अलग ही हो जाता है, यहीं जला दिया जाता है. ये शरीर भी साथ नहीं जाता है. तो तुम्हारे साथ जाने लायक कुछ सामान तुमने बनाया है या नहीं? लोग कई बार कहते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए घर अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दीजिए मकान अच्छा हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए. और मैं हर बार कहती हूँ, घर, बिजनेस, मकान, बच्चे, शादी, इसका आशीर्वाद मैं नहीं दे सकती हूँ. क्यों? शादी की नहीं, बच्चे हैं नहीं, घर बनाया नहीं. तो जो चीज मेरे पास नहीं है, उसका आशीर्वाद मैं तुमको कहां से दे दूं? Are you getting what my point is?
So when people say, bless us, we may have a good marriage, we get a good spouse, we get a good job, we get a good wife, we get a good husband, we make more profits, bless us. I can't do that. I'm helpless, absolutely sheerly helpless. And I have no qualms to confess that I have no miraculous powers to give you these boons. I cannot. I don't have it. So I cannot give a consult on something which I don't experience. A lady came yesterday and she was saying, my husband doesn't respect me, my children don't do this, and I'm very unhappy, please tell me what to do. I said, how would I know? I don't have a husband, I don't have a children, poor me. How can I give advice on to that? She said, no, you can bless, you give me some mantra. I said, you definitely don't want any advice from me because my advice will be very disastrous for you. Because if you say your husband doesn't respect you, your children don't respect you, they don't love you, and I would say kick them all out. That's my opinion and advice. Why should you bother about those who don't love or respect or attend you? I said, you don't want my advice. But the problem is, there are loads of gurus and babas working in the society who have only expertise of this stuff only. They say, okay, your wife doesn't listen to me, come to me. I'll give you a mantra. Your wife will obey. Please check him when he goes back. Does his wife obey or not? Rich, boisterous, powerful. Now President of America. But I say this openly. I don't have any siddhi or mantra which I can give to you which will make you a successful entrepreneur, businessman, get you a job, get you a husband, get you a wife, get you good children, get you a good house. I cannot do that. But I know one thing, and that is how to explore the inner recesses of your consciousness. I can surely, with all the authority, can guide you to go into deep meditations and experience samadhi. I can surely help you to remove the darkness of your mind, the avidya, and make your intellect illuminated. So if you come to listen to me, then you should know what I have to offer. And what I have, I am so ready to share it with you. With all humbleness. Whatever I have, you can own that. But don't ask me about worldly stuff. मेरे तो कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि ये फिर भी भूले भटके प्राणी मेरे पास क्यों आ जाते हैं। एक ने बोला जी मेरा घर वाला ना बहुत तंग करता है मेरे को। मैं कहा बंदा ही ठीक नहीं, छड़ परा। किसी बच्चे अच्छे नहीं है। मैंने कहा ये और भी अच्छी बात हो गई, मोह ममता पड़ी नहीं, पहले ही छूट गई तेरी। उनको एक थैंक यू नोट भेजो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बच्चे अच्छे होते तुम्हारी ममता पड़ती तो हाय मेरा बच्चा करती रहती सारा समय। अब छूट गई, ये तो ईश्वर की कृपा हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि उद्धव, जिस पर मैं अपनी कृपा करता हूं उससे मैं धन संपत्ति छीन लेता हूं। जिस पर और ज्यादा कृपा करता हूं उसके सारे संबंधी और मित्र उससे छीन लेता हूं। और जिस पर अत्यंत कृपा कर दूं, मेरे सिवाय वो किसी को अपना नहीं कह सकेगा। ये प्रभु की कृपा है ना। कितनी खतरनाक बात बोली, मैं इतनी खतरनाक नहीं बोली।
मैं तो बड़ी मीठी मीठी बात बोल रही हूं, कृष्ण बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं। सिवाय ईश्वर के अपना कहने को उसके पास कोई ना होगा, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा उसका सर्व संबंधी होगा। तो ये कृपा है। तो ये विपत्ति हुई कि ये कृपा हुई? हाँ, अगर अपने भाग जाएं तुम्हें छोड़ के तो ये मुसीबत हुई कि कृपा हो गई? बड़ा मुश्किल है। देखो, मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई ना, वही दुकान नहीं चलती, लाल चटनी खा लो, हरी चटनी खा लो, कृपा हो जाएगी। और ये सवाल पूछने के लिए 5,000 रुपया पहले दिया होता है। वो तुम्हें ऐसे बाबा कितने पसंद आते हैं, यू रियली लव देम। जो तुम्हें बेवकूफ बनाते तुम्हें वो पसंद आते हैं, जो तुम्हें ज्ञान दे के जगाए तुम कहते ये कैसी बात बोलते। पर सच यही है, धन संपत्ति तब तक काम आएगी जब तक जीवित हैं, और उसमें भी एक लिमिटेशन है। पैसा मकान तो देता है, मन का चैन नहीं दे सकता। पैसा चीजें तो देता है, पर चीजों से सुख भी मिल जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और तुम पैसे वाले हो तो शादी अच्छी हो सकती है, तो पत्नी या पति मिल सकते हैं, पर वो अच्छे निकलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हमारे कोई जानने वाले, उन्होंने अपने लड़के की शादी करी, कोई 3 साल बाद मुझसे फिर मिले। मैं पूछा कैसे हो? कह रहे जी 25 लाख खर्च करके मुसीबत घर लाए। लड़के की शादी पर 25 लाख कहते हमारा लगा, 25 लाख खर्च करके हम घर में मुसीबत लाए हैं। जब से हमारी बहू आई है हम बता नहीं सकते हम कितने परेशान हैं, क्योंकि वो बात बात पे कहती थाने कर रही हूँ फोन, उसकी कोई बात ना मानो तो थाने कर रही हूँ फोन, और वो अपनी मर्जी करती है, और हम सब हाथ बांध के गुलाम हो गए हैं उसके, और वो पेशे से भी वकील है।